So hello students, welcome back to Education House, the house of knowledge. So I hope you are doing well. And as you know, in our last two lectures, we have covered the gas laws, the gaseous state and the pressure calculation. So today we are continuing our chapter with the relation of density with the pressure and our temperature. So our first topic is relation of density with pressure and temperature. So you all know what is density. That density is mass over volume. D density is equals to mass over volume, and we have to check its relation with the pressure and temperature, that what is the effect of a pressure and temperature over the density of a gas and its other applications. So we have PV is equals to nRT, and we know that number of moles N is equals to weight over molecular mass, and our density D is equals to mass over volume, or you can write it also weight over volume. So the value of V is weight over D density. So we'll write P into W over D is equals to W over M into R into T. So the final equation here we get is D is equals to Pm over RT, where P is the pressure of a gas, M is the molecular mass, R is the gas constant and T is the temperature. So we can conclude that the density is mainly dependent upon the pressure and the temperature. As you can see, the value of R is constant and the molecular mass of a gas is constant and varies according to gas by gas. But the pressure and the pressure and temperature conditions can change at any moment because of various factors like any reaction, any height, altitude or other things. So we can say that the density is mainly dependent upon pressure and temperature. And from here we can see that density is directly proportional to pressure and density is inversely proportional to temperature. And if we see from D is equals to mass over volume, the units of density are gram per liter, and from here we can also make units which will become atmosphere, that is pressure in atmosphere, molecular mass in grams, and R is a gas constant, its value you know we have discussed it in the previous lecture, and temperature is in Kelvin. So here also we can derive one unit, and generally we can use gram per liter as the units for density. So now we will see what type of question can be asked to us from this concept. So it's important and you should note the question is, in which case CH4 has maximum density. So here we are given with the four cases and we have to identify in which case the gas CH4, that is methane, has a maximum density. So as above we have seen that density is equals to pressure over the temperature. So we will check for each case. As in a case A, there is a STP, and in a previous lecture we have discussed that at STP the pressure is 1 atmosphere and temperature is 0 degree Celsius, means 273 Kelvin. So it is 1 over 273. In this case D will become 0.5 over 273. Here D is equals to 2 over 273, and here D will become 2 over 546, as there is 273 Celsius. So to change it into Kelvin, it will become 546. So now we have to check which case has maximum density. So we have to solve the values of these. So how can we solve it in a smart way? So if we see in case D, it will become 1 over 273. So it means A and D will have equal density. Now the value is between B and C. As in case of C, we have 2 over 273 and
In the above case 0.5 over 273. To make it more easy, we'll multiply the above case by 2 in both numerator and denominator, so it will become 1 over 546. And here we know that the denominator is large, so this value will become less and this density will become less than the density in a case C. So the maximum density will be in case C. So this is the correct order for the density of the gas in the four cases. So you can see that these type of numericals can become asked to us in the exams, especially in JEE. Such type of numericals, as we have discussed, these type of numericals can come. So our next topic is Dalton's law of partial pressure. So what is this law? According to this law, the total pressure of a non-reacting gaseous mixture is equal to sum of partial pressures of gases. So students, the term here non-reacting is very important and the law is totally standing on this word. So what does it mean? We'll see by an example. So let us consider we have a gas N2 in one container which is having a pressure of a P1, and in another container we are having oxygen gas with the pressure P2. If we mix both these gases in a third container, N2 plus O2, and these gases are non-reacting. Non-reacting means these gases do not react at ordinary conditions. So the pressure of this mixture will be P1 plus P2. So P of mixture is equals to P1 plus P2. So you have understand what is its definition. So now we will see what are its applications. So the basic condition for this law is condition which is important to remember, that the mixture should be non-reacting gaseous mixture. So most of the students यहाँ क्या गलती करते हैं कि जब उन्हें कुछ इस तरह के इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कई बार क्वेश्चन में नॉन रिएक्टिंग की जगह रिएक्टिंग लिखा होता है, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, वो इस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स कई बार जल्दबाजी में ये डाल्टन्स लॉ वहाँ अप्लाई कर देते हैं और उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। सो आप नॉन रिएक्टिंग वर्ड के बारे में खास ध्यान रखिए कि आपको नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर मेंशन्ड हो तो ही आप ये फॉर्मूला, इसके रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो यूज करें एंड सॉल्व करें। सो नाउ व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ, डाल्टन्स लॉ? एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ. So our first application is it help us to calculate total pressure of a mixture. It helps us to calculate total pressure of mixture. So what does it mean? Let us study this by an example. So let us see this example. So here we are given that two gases having one of the gas having pressure P1 moles and one volume V1 and temperature T1, and the other having the conditions like P2, N2, V2 and T2, both are mixed, and the final mixture is having pressure P3, number of moles N3, volume V3 and temperature T3. So if we are asked to calculate any of the values of the mixture and given these values, so how can we solve? So we can see that pressure, temperature and volume, these quantities will change when the gases are mixed, but the number of moles of gases will remain fixed. So we will change both these equations into mole form. So N1 is equals to P1 V1 over R T1, and this is equals to N2, which is equals to P2 V2 over R T2, and this equation will become N3, which is equals to P3 V3 over R T3. So we can see
N3 is equals to summation of both N1 and N2. And if we have to change equations in the form of this, so we will substitute these values and calculate the answer. So here we can write P3 V3 over R T3 is equals to P1 V1 over R T1 plus P2 V2 over R T2. So R is common and can be taken and cancelled out. So net equation will be P3 V3 over T3 equals to P1 V1 over T1 plus P2 V2 over T2. So this is the equation. So if we are given that the temperature is same in all the three cases, then this equation will reduce to P3 V3 is equals to P1 V1 plus P2 V2. So this was the first application, that to calculate the total pressure of a mixture using the Dalton's law. So the next application is, it helps us in calculation of partial pressure of a gas in a mixture. So second application is calculation of partial pressure of a gas, in a mixture. So इस केस में क्या है, so means if we are given a mixture of a gases, like here we are given a mixture of N2 plus O2 and we are asked to find out the partial pressure of N2, means on the pressure of only nitrogen gas, and we are given the total pressure and the concentration of these gases in moles. So we will write pressure of a nitrogen will equal to number of moles of nitrogen, let it be N2 R T over V, and the moles of oxygen PO2 NO2 R T over V, and the P total is equals to N total. P total is equals to N total into R T over V. As the container is same, so volume and temperature will be same in all the three cases, and the R is constant. So here we give names as equation 1, equation 2, and this is our equation number 3. So if we divide, now we have to calculate pressure. Now here we write divide equation 1 and 3. So equation 1 is Pn2 is equals to Nn2, means number of moles of nitrogen, RT over V, and equation 3 is P total is equals to number of total moles of both the gases into RT over V. So RT and V are same, and we will cancel these terms, and the net result is pressure of nitrogen over total pressure is equals to number of moles of nitrogen over number of total moles. So by using this method, we can calculate the partial pressure of a gas in using the Dalton's law of partial pressures. So the next application is very important, as the numerical from that is often likely to come in the JEE exam. It is important, so see it carefully. It helps us to calculate pressure of dry gas. So you will ask, sir, what is dry gas and what do you mean by dry gas? So students, कुछ केसेस में हमारे पास क्या होता है, जब गैस को ऑब्टेन किया जाता है उसे वाटर के थ्रू किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन करनी है, उसका एक मेथड होता है कि यहाँ एक सिलेंडर को पानी से फिल करके कंटेनर में इन्वर्ट किया जाता है, एंड here we are having KClO3 and this is burned using a burner, and ऑक्सीजन गैस यहाँ. सो जैसे जैसे ऑक्सीजन गैस एंटर करती है तो वाटर इसमें से रिलीज आउट हो जाता है एंड ऑक्सीजन गैस इन हो जाती है, और फाइनली हमें एक सिलेंडर मिलता है जो कि पूरी तरह O2 से फिल्ड होता है. सो now the case is कि in this cylinder there is oxygen gas as well as some water droplets, oxygen plus water
ड्रॉपलेट्स। सो अगर हम प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों का कैलकुलेट होगा एंड दिस इज नॉट करेक्ट। सो अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस का प्रेशर चाहिए, दैट इज द प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे पी ड्राई गैस इज इक्वल्स टू P wet gas means the gas plus water vapor minus vapor pressure of water. Now this term vapor pressure plays its role. So the term vapor pressure, this is also known as aqueous tension, AQUOS, aqueous, TENSION, aqueous tension. So now we'll see how the numerical can be asked on the third application. So the question is, oxygen is collected over water at 1.1 atmosphere pressure in a 1 liter vessel at 27 degrees Celsius. Calculate number of moles of oxygen in a vessel. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यस दी हमें प्रेशर गिवन है तो वॉल्यूम भी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, सो बाय यूजिंग द इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT वी कैन कैलकुलेट द मोल्स एज PV ओवर RT एंड उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। सो रीज़न आप देखेंगे यहाँ हमें एक और चीज़ एक्वस टेंशन भी गिवन है, तो इसका क्या यूज़ है और ये क्या चीज़ है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि pressure of a dry gas is equals to pressure of a wet gas minus pressure vapor pressure of water, and this is also known as aqueous tension. So we have to calculate the moles for only oxygen, means the moles for the dry gas. So students, the temperature will remain same and the volume will remain same. The only change in the question is of the pressure, which is because of the water vapors, because जब ऑक्सीजन एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हैं तो उन दोनों का नेट प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल्स टू pressure of wet gas, which is 1.1 as given in the question, minus aqueous tension, that is 0.1 atmosphere at 27, and our problem is also at 27, so we'll subtract this and the net pressure of dry gas is 1 atmosphere. So now we will use ideal gas equation, N is equals to PV over RT, and the pressure P here will be 1 atmosphere. Now the number of moles that will come, these will be correct, pressure of oxygen, and this will be correct answer. So this is the important concept, and you have to see, then if you are given with the aqueous tension, then you have to remember that there is definitely a use of this term, and you think of this pressure of dry gas is equals to pressure of wet gas minus vapor pressure of our water. So this was our Dalton's law and about its 3 applications. So now we will move to our next topic, and our next topic is Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बिकॉज ये टॉपिक जेई मेंस के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवाया जा रहा है. सो the students who are not interested to do this, they can leave, but the students who are preparing for the JEE and NEET, I recommend to those students to definitely practice this topic and understand it, because इसमें से आपको क्वेश्चन आने के काफ़ी हाई चांस होते हैं एंड क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं. सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. सो पहले हम समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है. सो व्हाट डज दिस टर्म मीन. सो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. सो यहाँ सिर्फ हम गैसेस के बारे में बात करेंगे. सो वी विल से दैट द मूवमेंट ऑफ ए गैस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. And the another term comes here is effusion. EFFUSION, effusion. This is also similar to diffusion. The only difference is diffusion
through a small hole. Diffusion through a small hole is known as effusion. So what does it mean? For example, if we have a vessel like this and its opening is very small and the gas is coming out of this hole, so this is called as effusion, as diffusion through a small hole. So now this concept is also having 3 or 4 applications. So now we will learn what are its application and what is the significance of those applications. So applications. So the application number 1 is to calculate the rate of a gas. To calculation of rate of movement of गैस. सो आप सोचेंगे कि सर आपने कुछ बताया तो है नहीं, सिर्फ लॉ की डेफिनेशन बताकर काम छोड़ दिया. तो देखते हैं कि हम क्या लॉ क्या कहता है. सो लॉ के अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square root of its molecular mass. That is, our rate is inversely proportional to under root of molecular mass of that gas. Okay, so R is equals to rate and M is our molar mass or molecular mass. You just only consider it as a molecular, no molar mass. Okay, so now the first application is calculation of rate of a movement of a gas. So for calculation of a rate, we need to know is only the molecular mass of a gas. So let us see an example that we are given with the two gases, hydrogen and methane, and we have to calculate the rates of these gases. So rate of hydrogen will be equal to 1 over under root of molar mass of a hydrogen, and rate of methane will equal to 1 over under root of molar mass of a methane. So if we are given 3 terms in this and we have to calculate the 4th term, so हम दोनों दी इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे and the result we will get is rate of hydrogen over rate of methane is equals to under root molar mass of methane over molar mass of hydrogen. So जब आप इनको डिवाइड करेंगे, इनके मोलर मासेस डिनोमिनेटर में है, सो वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगे एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन दैट the rate of hydrogen over rate of CH4, that is methane, is equals to under root of molar mass of CH4 over molar mass of hydrogen. So स्टूडेंट्स, रेट को हम और क्या क्या लिख सकते हैं. रेट इज इक्वल, अगर हमारे पास यही फ्लूइड्स के केस में आ जाए, वैसे तो हम गैस को भी फ्लूइड में ट्रीट करते हैं, बट अगर लिक्विड आ जाए, सो द रेट विल बी वॉल्यूम ओवर टाइम एंड वी कैन ऑल्सो यूज नंबर ऑफ मोल्स ओवर टाइम. सो इसके थ्रू हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है. सो हाउ? सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है दिस थिंग, एंड अगर हम इसको वॉल्यूम एंड मोल्स में चेंज करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा. सो वी विल सी. सो जैसा कि हमने ऑब्टेन किया था कि रेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ मीथेन ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन. सो रेट की वैल्यू हमने वॉल्यूम ओवर टाइम लिखी. सो लेट अस सी, आर ऑफ हाइड्रोजन विल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ओवर टाइम हाइड्रोजन. और जब हम इसके रेट, मीथेन के रेट को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो रेसिप्रोकेट होके वो हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ दिस मीथेन ओवर वॉल्यूम ऑफ मीथेन विल इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ मीथेन over molar mass of hydrogen. So this is our second formula if we have to calculate rate in terms of a volume. So यही हम वॉल्यूम की जगह नंबर ऑफ मोल्स भी यूज कर सकते हैं एंड इसी तरह हमारे पास तीन तरह के ये फॉर्मूलाज आ जाते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टाइम टेकन बाय हाइड्रोजन गैस इनटू टाइम टेकन बाय मीथेन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन is equals to root of molecular mass of methane over
मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स आप इस बात का ध्यान रखें कि कैपिटल M यहाँ हम मॉलिक्यूलर मास के लिए यूज कर रहे हैं, एंड जो N है ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स, एंड T इज टाइम नॉट दी टेम्परेचर, क्योंकि इस चैप्टर में हम T को मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेम्परेचर के लिए ही यूज करते हैं। सो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइए। सो आप T को रिमाइंड रखें, ध्यान में रखें कि T यहाँ हमारा टाइम होता है। सो ये था हमारा ग्राहम्स लॉ एंड उसकी एप्लीकेशंस। सो इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो स्टूडेंट्स, दैट इज कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन डिफ्यूजन इज थ्रू पाइप। कंपैरिजन of distance covered, comparison of discovered when diffusion is through pipe of uniform cross सेक्शन। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये लॉ जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी विल सी व्हाट इज इट एंड व्हाट डज इट सेज। सो जैसा कि हमने देखा कि अगर हम बात करें कि डिस्टेंस की, सो आप जानते हैं नॉर्मली जो तेज भागेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इट इज़ कॉमनली, और वी कैन कॉमनली अंडरस्टैंड दिस। सो जैसा कि हमने डेफिनेशन लिखी कि कंपैरिजन ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन डिफ्यूजन इज थ्रू पाइप ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सो हमारे पास एक पाइप है जिसके क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ से सेम है। सो हम कंसीडर करते हैं यहाँ एक साइड हमारे पास नाइट्रोजन गैस है एंड इस एंड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। सो तो अब ये दोनों गैसेस अगर मूव करेंगी तो इनके रेट्स में डिफरेंस है, एंड जिसका रेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इन अ टाइम T, एंड जिसका रेट कम होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो मैंने ये रैंडमली मेंशन कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी गैस ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट की जगह हम डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डिस्टेंस ऑफ नाइट्रोजन ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑक्सीजन विल इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसके बेस और इसके बिहाफ पे भी हमें सीधा सीधा न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में। सो आप इस चीज़ को भी समझें। इन सभी न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर दूंगा जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स पर ही बात करेंगे। सो ये था हमारा ग्राहम्स लॉ। सो आज हमने 3 मेन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए: रिलेशन ऑफ डेंसिटी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, डाल्टन्स एटॉमिक लॉ एंड आवर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो नाउ आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ग्राहम्स लॉ। सो अगर हम बात करें कि हमारे पास गैसेस हैं अलग अलग, हम उनका रेट चेक कर रहे हैं, तो अगर किसी गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा। सो नाउ वी विल सी दैट हाउ डज इट इफेक्ट आवर ग्राहम लॉ। So as we know that rate is inversely proportional to square root of a molar mass, and the rate is directly proportional to pressure, so the rate becomes P over root of M. So अगर हम दो गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं R2 over R1, here pressure is directly proportional to rate, so we will write it as P2 over P1 over P1 into root of M1 over M2. As pressure is directly, so it comes in a multiplication and we can see the effect of a pressure. So students, in some cases हमें pressure की जगह number of moles given होते हैं, and we can also use number of moles in case of instead of pressure, because pressure is also directly proportional to number of moles. अगर किसी गैस के मोल्स ज़्यादा होंगे मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, इसका मतलब उसका प्रेशर भी ज़्यादा है। सो हमारे रेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा भी बन सकता है, R2 over R1 is equals to N2 over N1 रूट M1 over M2.
सो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ ग्राहम्स लॉ एंड आवर लास्ट टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राहम्स लॉ। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि हमारी इंडस्ट्री में हम फिजिकली डेली लाइफ में कैसे इस लॉ को यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज एटोमोलिसिस। सो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में क्या होता है, जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं इन लार्ज क्वांटिटीज एंड हमें उनको सेपरेट करना है, सो द प्रोसेस नोन एज एटोमोलिसिस इज यूज्ड। इसमें कुछ इस तरह का सेटअप होता है कि ये हमारा बीकर कंटेनर 1 है। सो इस तरह के हमारे कंटेनर्स जुड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा काउंट में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैसेस। सो इसमें हमारे पास अगर एक मिक्सचर है, लेट अस सी वी हैव अ मिक्सचर ऑफ अ हीलियम एंड अदर गैस मीथेन CH4। सो अगर हम एक बार डिफ्यूजन करवाएंगे तो क्या होगा कि कुछ इसमें से गैस आगे जाएगी दोनों, और जो गैस का रेट ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा अमाउंट आगे पहुंच जाएगी, और दूसरी जिसका रेट कम है उसकी कम अमाउंट। सो अगर इसी स्टेप को हम कंटिन्यू रखेंगे तो लास्ट में एक ही गैस हमें मिलेगी और उस तरीके से हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, अगर हम बात करें कि स्टेप नंबर 1 कि एक बार हमने डिफ्यूजन करवाया तो लेट अस कंसीडर इनिशियली हमारे पास N1 एंड इसके N2 मोल्स हैं। सो जैसा कि अभी हमने प्रेशर कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि हम प्रेशर की जगह मोल्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मोल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर। सो इस केस में हम एज्यूम करते हैं हमारे मोल्स होते हैं N" इन बीकर नंबर 2। सो N" ऑफ हीलियम ओवर N" ऑफ methane will equal to N1, that is the moles of methane initially over moles of helium initially and moles of methane initially over molecular mass of methane and molecular mass of helium। so यही स्टेप हमारा बार बार कंटिन्यू रहेगा जैसे हम प्रॉब्लम को आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे कि स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इनिशियली ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इनिशियली इनटू रूट ऑफ मास ऑफ मीथेन ओवर हीलियम। सो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस इन एंड over number of moles of other gas in end is equals to number of moles of first gas initially, that is in initial step the number of moles we are having, over number of moles of other gas initially over root of molar mass of the second gas over molar mass of the first gas raised to power n. Here n is the number of steps up to which we have carried this process. So this is the very important from JEE point of view. So do practice for this, and in the next or one lecture after the next lecture we will discuss the numericals of the whole chapter and I'll give you some practice questions for your practice. So I hope आपको सारा टॉपिक आज का समझ आया होगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो अगर आप उस फॉर्म पे जाके हमारे चैनल के लिए रजिस्टर करते हैं सो आपको आपकी मेल के थ्रू सारे लेटेस्ट वीडियो लिंक्स मिलेंगे एंड नोट्स एंड टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड होगी। एंड ये ऑफर हमारी लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल फ्री है, आपको सारे नोट्स एंड टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगे। सो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और नोट्स एंड टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाइए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।